talk about the double mutant variant of virus जिसकी आजकल बात हो रही है. So first of all, see, Ministry of Health and Family Welfare said that scientists who have been studying the genome means क्या होता है? The complete set of genetic information of an organism of the novel coronavirus have identified a double mutant variant in the country. तो जो scientist actually ये पूरा जो जीनोम की स्टडी कर रहे थे, जीनोम मीन्स एक पूरा कंप्लीट सेट होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का जो एक कंप्लीट सेट होता है, दैट इज़ कॉल्ड जीनोम. सो जो साइंटिस्ट स्टडी कर रहे थे उन्होंने ये पाया कि जो नोवल कोरोना वायरस है उसका एक डबल म्यूटेंट वेरिएंट हमारी कंट्री में घूम रहा है. Fine. And it said that this new variant has been detected in samples from some states and UTs, including Maharashtra, Kerala, Andhra, Telangana, Delhi, Gujarat, Punjab, among others. So in सब states में मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है that it's found only in a single state, but like it's present in many of the states. Fine. Now let's see. So what do you mean by double mutant? Fine. The virus which is now found is double mutant variant of the virus. So what do you mean by double mutant? See, first of all, let me tell you, mutation means what? Mutation means any change in the genetic genetic information or any genetic like genes में जो change आता है. Fine. Now this, what is double mutant? According to Dr. Rakesh Mishra, the director of Center for Cellular and Microbiology in Hyderabad, where the double mutant variant was first sequenced, fine, mutations in viruses are common. So it's not the first time that we have come across a mutation in the virus. Fine. So it's very common in the viruses. Mutations do occur in the virus. Like all viruses, the coronavirus keeps changing in small ways as it passes from one person to another. Fine. So this virus, this novel coronavirus, it keeps on changing as it passes from one person to other. So small amount of mutations does occur in it. Now, however, most are insignificant. Most of the mutations are very insignificant, fine, and do not cause any change in their ability to transmit or cause infections. But some mutations, like the ones in the United Kingdoms or South Africa and this Brazil में जो है, can make the virus more infectious and in some cases even deadlier. कुछ म्यूटेशंस ऐसी होती हैं विच आर लाइक उतनी ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती हैं, फाइन, एंड दे आर नॉट ईजिली रिकॉग्नाइजेबल. वाई? बिकॉज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, द काइंड ऑफ इन्फेक्शन दे कॉज, द काइंड ऑफ सिम्टम्स दे कॉज, इट्स वन इन द सेम, सिमिलर रहते हैं. बट देर आर सर्टेन म्यूटेशंस इन द वायरसेस which can take deadly forms. For example, in the UK, that was a different variant of virus than in Brazil, in South Africa. Fine. Now, earlier in the pandemic, only one mutation was seen in the spikes of the receptor of the virus that helps in binding the virus with होस्ट सेल्स. बिकॉज हमें पता है कि जो वायरस होता है वो जब किसी की बॉडी में जाता है, किसी होस्ट सेल के पास में जाता है, फाइन, तब वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह काम करता है. तो जब पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था तो एक ही म्यूटेशन देखने को मिलती थी, ठीक है. रिसेप्टर्स इन द वायरस प्रोड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स इन द होस्ट बॉडी. ओवर द पास्ट ईयर ऑफ द पेंडेमिक थाउजेंड्स ऑफ सच म्यूटेशंस हैव बीन आइडेंटिफाइड. तो वायरसेस में देयर हैव बीन सो मेनी म्यूटेशंस, फाइन, एज दे passes from one body to other. This he explained that double mutation. Now let's talk about double mutation. Till now we have talked about mutation in the viruses. Now we are going to talk about double mutation. So double mutation is when two muted strains of a virus come together to form a third strain. For example, there was a coronavirus. Now this is A variant and this is B variant, and these two are forming a third कैटेगरी. फाइन, एक थर्ड स्ट्रेन बना रहे हैं ये, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, ब्राज़ील वाला एंड यूके वाला दोनों कंबाइन कर कर इन्होंने एक थर्ड वेरिएंट को क्रिएट किया है. फाइन. तो दिस मीन्स डबल म्यूटेशन. दो जो म्यूटेंट, ऑलरेडी म्यूटेंट जो स्ट्रेन्स हैं वो कंबाइन करेंगी और एक थर्ड जो है स्ट्रेन बनाएंगी.
Fine. The new mutation reported in the country on Wednesday is a result of the combination of, अब ये दो जो strains इन्हें मिले हैं हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, but हम पढ़ रहे हैं because it was given. So the new mutation reported in the country, it is the result of the combination of this E484Q, which is ये एक indigenous strain है, and L452R, which is a foreign strain. ठीक है, तो this is double mutant variant of the this coronavirus. Now हमने समझ लिया कि डबल म्यूटेशन क्या है. नाउ इज द न्यू म्यूटेशन अनदर वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न. क्वेश्चन ये उठता है, ठीक है डबल म्यूटेशन हो गया तो क्या ये जो नया एक थर्ड स्ट्रेन बना अब ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है. बिकॉज सी ये जो स्ट्रेन बना है ये एक वेरिएंट ही है. फाइन, इट्स अ वेरिएंट ऑफ द कोरोना वायरस, तो क्या इट्स अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न. सी, सो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डायरेक्टर एम्स दिल्ली, बिकॉज द म्यूटेशंस इन द वायरस आर नॉर्मल and expected, the medical community concern lie what it is called as the variant of concern. म्यूटेशन तो होगा बट हमारे लिए इशू तब हो जाता है, हमें ये जानना पड़ेगा कि क्या ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है. He further explained that these variants of concern are those variants that have some clinical consequences, like either those mutations cause an increase in the number of cases or cause more severe cases or cause more mortality. So ये जो म्यूटेशन होगा और जो थर्ड स्ट्रेन आएगा, सो दिस म्यूटेंट विल बी अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न इफ इट विल बी हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ मेडिकल कॉन्सिक्वेंसेस. फॉर एग्जाम्पल, इफ इट विल इंक्रीज द नंबर ऑफ केसेस और इट विल increase the mortality, or it will cause more severe cases, or it will affect the immune system more, more in a deadly form. So which means that people who have already suffered COVID-19 have a high chance of reinfection, and those who have been vaccinated are not protected adequately. So even after vaccination, if people are not having protection against this mutant, then this will be a variant of concern. बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में, अगर इसके कॉन्सिक्वेंसेस, मेडिकल कॉन्सिक्वेंसेस जो अर्लियर जो कोरोना वायरस जो चल रहा था उससे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, then definitely it will be a variant of concern. As of now, mutations cannot be deemed responsible for the surge in COVID-19 cases. अभी हम डेली सुनते हैं कि आज हाई केसेस मिले हैं एंड डेली केसेस इंक्रीज करते जा रहे हैं. पीपल आर एक्सपेक्टिंग अनदर लॉकडाउन्स, बट एनीवेज डोंट गो इनटू द रूमर्स. बट द थिंग इज, दे आर सेइंग दैट जो भी अभी केसेस में राइज हो रहा है, वी कैन नॉट से दैट दिस इज बिकॉज ऑफ द डबल म्यूटेंट ऑफ द कोरोना वायरस. फाइन, द न्यू स्ट्रेन इज एफिशिएंट बट इट इज़ नॉट अ सुपर स्प्रेडर. अभी हम इसे सुपर स्प्रेडर नहीं कह सकते हैं. देयर इज़ नो रीज़न टू बिलीव दैट इट इज़ मोर डेडली just yet, but more investigation is required to understand this, because अभी इसको आइडेंटिफाई किया गया है तो फर्दर और इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है in order to find out कि is it deadly or is it causing more cases to come up. Fine. सो हमने वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न के बारे में देख लिया. नाउ सो फार देयर इज़ नो रीज़न टू बिलीव वैक्सीन्स इन इंडिया. दो वैक्सीन्स हैं इंडिया की, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन. So there is no reason to believe that these vaccines will not work against these new strains. But experts say that time has come for India to bring more vaccines to India. जो Pfizer और Moderna जो है, ये जो vaccines हैं इनको भी इंडिया को कहीं ना कहीं लाने की ज़रूरत है, क्योंकि इनके efficacy जो rates हैं वो काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं and have been proven to act against the new strains. So this is the need of the hour, so that we cannot be complacent in our approach that these two vaccines are available and people are getting vaccinated, so there will be no spread of virus. As now we are aware that double mutant of coronavirus is there, and still we don't know that how does affecting the population, and will the vaccines in the coming future they will be able to handle it or tackle it. So India cannot be complacent in its approach with respect to vaccination, and it has to probe in these different kind of vaccines which are being developed in other nations as well, and which have more efficacy rates. So this is with respect to this. That's all. Thank you.